Hi everyone, apana manaka samastainku. Ehi video re bahut swagatata ajira ehi video re ami apana manka sahita public administration ra theoretical perspectives. Ra describe the ecological approach, meaning nature and ecological approach in public administration and its models. Ara long question answer ra notes share and discussion kariba and video ra agaku mu kahibi apana mane ehara notes kipari download. Karibi chala into start Kariba. The ecological approach in public administration draws inspiration from ecological systems theory, which is primarily associated with the work of Yuri Bronfenbrenner. The ecological approach in public administration recognizes that public organizations operate within a broader environment and that their functioning is influenced by interactions with various external factors. Here's an overview of the meaning, nature, and models associated with the ecological approach in public administration. The ecological approach, parasthetic drashtikon in public administration, with its emphasis on adaptation, interdependence, and holistic understanding, SMGR-SMGH, provides a framework for analyzing and improving the effectiveness of public organizations within their broader context. We hope all enjoy this video and understand the topic. Now we start by notes. Let's start it. Describe the ecological approach, meaning, nature, and ecological approach in public administration and its models, or describe the Friedrich-Fuse pessimist model to explain the administration system in the comparative administration. तो डीट जो क्वेश्चन परीक्षा आसिले सेम आंसर हम तो आम देखा इकोलॉजिकल अप्रोच मीनिंग और फीचर बा नेचर पे कहि परबा इन इकोलॉजिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल्स तार मॉडल कोन कोन रही किंबा डिस्क्राइब फ्राइडेज फ्यूज पेसिमिस्ट मॉडल टू एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन. In the traditional studies of public administration, little attempt was made to examine the relationship between the administration system and the socio-economic political culture government. बेले कौन देखिले आम जो ट्रेडिशनल स्टडीज आम परंपरा कौन पढ़ी आसुले जे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बा लोक प्रशासन गोटे लिटिल अटेम्प्ट वाज मेड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप कौन करा कहीं जानापी जे रिलेशनशिप कौन अच्छी प्रशासन मध्य आ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर मध्य एनवायरमेंट मध्य इन विच जो थी कि इट ऑपरेट जहाँ कि कौन ऑपरेट हो जो सिस्टम चलुची रिलेशन कौन अच्छी. Such a deficiency was mainly responsible both for inadequate and limited studies of public administration as well as for lack of comparative public administration studies. It is also acted as a big hindrance in the way of a really productivity and efficient action of the part of public administration. The public it is acted a role play करे काम करे big hindrance in the way of really productivity and efficient action on the part of public administration. The exercise got the name the ecology of administration. At present, the ecological approach enjoys an important place in public administration studies. Next देखिबा the basic features of ecological approach कोन ना the basic feature of ecological approach holds the view that to a very large extent man is a product of his environment, and this is also true of an applies to his all social, political, economic and administrative institutions. The ecological approach holds the view that to a very large extent man is a product of his environment, and this is also true of and applies to his also social, political, economic and administrative institutions. All institutions, structures and system of work including public administration are influenced by its environment and social culture. तो जति प्रत्येक इंस्टीट्यूशन अच्छी स्ट्रक्चर एंड सिस्टम प्रत्येक ऑफ वर्क इन्फ्लुएंसिंग इंक्लूडिंग पब्लिक एंड लोक प्रशासन मध्य एथिरे कोन इन्फ्लुएंस होती इट्स एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चर. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन began a subsystem of social system naturally interacts with the other subsystem of society. Likewise, in every society, political, social, cultural and economic system influence the administrative systems.
Hence, the study of public administration can never be complete and really useful without a study of its environment in which it works and interacts. कौन तार देखिले जे स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नेवर बी कंप्लीट तो पूरा नुह एंड रिलेटिव यूजफुल विथआउट ए स्टडी ऑफ इट्स एनवायरनमेंट व्हिच इट वर्क्स आ कोन हम तो जो पाठ करछंती जदि आमे खाली ताको पाठ पढल हबनी ता से तार जो एनवायरनमेंट अछि किपरि परिवेश अछि ताको मध्ये पढिया दरकार किपरि यह काम करछि किपरि यह सब इंटरैक्ट होछि भितर भितर ताको पढिया नै आवश्यक एग्जांपल द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट हैज बीन प्रिसेंटली such a relation that has complete all comparative studies of public administration to study the environment of administrative system working in various countries. Next है कौन meaning of ecological and ecological approach in public administration बा लोक क्वेश्चन रे इकोलॉजी रो मीनिंग कोन बा इकोलॉजिकल दृष्टिकोण तार मीनिंग कोन बिफोर स्टडीइंग द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन let us we clear about the meaning of ecology तो ठीक से परी इकोलॉजिकल अप्रोच पढ़ा पर हम इकोलॉजी कोन जानिया पड़िबो तो इकोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड द इंटरडेंस एंड इंटरेक्शन अमंग द वेरियस पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट as well as relations between people and their institution तो इकोलॉजिकल हम ठीक से पढ़ियागा जो लोकन अछंती पीपल आउट देयर तांकर जो इंस्टीट्यूशन अछि तांको भितर कोन सब एनवायरनमेंट के कोन रिलेशन कोन अछि तांको भितर संपर्क कोन ता जानिबो इकोलॉजी को छै As such, the term ecology of public administration means the relation of the environment. The impact of the political system, economic system, social system and administrative system on society, economic and polity is investigated in the study of ecology of administration. It stands, ecological administration stands designated and ecological approach to the study of public administration. Ecological approach focus on the study of relationship and interaction between the administration and the environment in which it works. The study of ecology of public administration can be undertaken by examining the relationship and interaction of the public administration with the social, economic and political and cultural environment of society. Next देखिबा ecological approach models and views of epidemic risks तो एपिडल रिस्क को हिसाब रे फ्लाइट रिस्क को हिसाब रे तांकर मॉडल ऑफ व्यूज कोन अछि ना एपिडल रिस्क फ्लाइट रिस्क एक्सप्लेन एंड यूज द इकोलॉजिकल अप्रोच as part of his deep interest in comparative public administration and development administration. He presented his ecological view of administration and defined it was an increasing ability to make and carry out collective decision on the environmental matters. तो अकॉर्डिंग टू मैंने कौन एपिडेमिक रिस्क हिसाब से द सेंस ऑफ डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस द डेवलपमेंट प्रोसेस सेंस ऑफ इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग रेदर देन द आउटपुट ऑफ द डिसीजन माने कौन जो आम सेंस भावुंट ताहा गोटे कौन इंपोर्टेंट रेदर ताको छाड़ी कौन डिसीजन मेकिंग आउटपुट कौन माने ताको छाड़ला पर डिसीजन हम कौन भाव नौ ताहा इंपोर्टेंट रिस्क हिसाब से एलाबोरेटिंग फ्यूचर हिज मॉडल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिस्क एनालाइज 3 मॉडल द रिस्क को 3 मॉडल एनालाइज करथिले ना फर्स्ट फ्यूज मॉडल डिफ्रेंट मॉडल pessimistic model so these three are defined and distinguished on the basis of structure and function तो एगुलो देखिबा तो फर्स्ट ही होची कोन ना फ्यूज मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो फ्यूज मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन कोन ना अकॉर्डिंग टू रिक्स दिस मॉडल इन्वॉल्व्स द एक्सटेंस ऑफ single structure which perform various forms such a society is a fused society और fused society से काम करें रिक्स selected impartial chain and the pre-revolutionary since Thailand as examples of his concept of a fused society. This society had no classification of function and signal structure carried out a number of functions. So the king and the official nominated by him carried out all administration of economic and other activities by themselves. The royal family played a very important role in the administration of the country. Our royal family administration रे बहुत important role play करे. Next है कौन differentiated model of administration. Differentiated model of administration कौन ना in this माने यही क्षेत्र रे model there are several different structures which however function with a high level of coordination माने कौन high level coordination हुए ताको जरा सब system जो run हुए
such a society is a defected society. Means society defected society to a defected society are different from fused society. Our defected society fused society to different. फ्यूज लोग रॉयल फैमिली काम करी किंतु एठी अलग गोटे बहुत बड़ कोऑर्डिनेशन थी ना सहभाग थी सब स्ट्रक्चर सिस्टम को कंट्रोल करते चलुथे. इन एवरी डिफरेंट सोसाइटी देयर इज स्ट्रक्चरल डेफिनेशन एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. डिफरेंट सोसाइटी वर्क्स एज ए मार्केट सोसाइटी. डिफरेंट मार्केट सोसाइटी हिसाब से काम करे. There is a high level of coordination among different structures. Risks called such different society as marketized society. A different society has a high level of development. It is characterized by a developed system of developed administration. Next है कौन pessimistic model of administration. So according to Riggs, a pessimist society has several social, economic, and political administration subsystem. Generally, pessimist society can be described as a developing society, and their administrative system are characterized by several maladies like nepotism, favoritism, corruption, inequalities, discrimination, uneven development, centralization of power, and bureaucratic domination. तो ये कौन ना सोसाइटी बा थर्ड मॉडल सोसाइटी रिस्क करो. ऑल दीज फैक्टर्स एक्ट एज हिंड्रेंस इन द वे ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल. सब कौन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब कौन गोटे प्रकार वे रे काम करती. According to Riggs, the pessimist society has three important characteristic features which the Riggs को हिसाब से जो pessimist society तार गोटे तीनोटी इंपोर्टाट कौन कैरेक्टरिस्टिक या प्रकृति चरित्र अच्छी से कौन कौन ना हेट्रोजेनिटी, फॉर्मालिज्म, ओवरलैपिंग. तो हेट्रोजेनिटी कौन हेट्रोजेनिटी है in this type of system. A system रे there are different kinds of patterns, rules, theory, and viewpoints. This society is a blend of elements of chamber. Example देखिए गोटे ना of few society bureaucracy और few society हम कहि पारे जो heterogeneity कोन few society हे पारो आ गोटे bureaucracy हे पारो आ different society मध्ये हे पारो. Thus heterogeneous group जो heterogeneous group थाए that qualifies are not like आर सीन इन दिस मॉडल. तो हेट्रोजेनियस ग्रुप मैंने कौन मैंने से आसती ये लाइन भितर. नेक्स्ट देखो फॉर्मालिज्म. फॉर्मालिज्म कौन ना फॉर्मालिज्म कहले बुझिबा दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट फीचर शो ए वाइड गैप बिटवीन थ्योरी एंड एटा कौन सेकंड इंपोर्टेंट फीचर हम देखिया थ्योरी एंड प्रैक्टिस रे. एग्जांपल व्हाट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड एंड एफिशिएंटली प्रैक्टिस्ड. इट शोस ए डेस्टिनेशन बिटवीन नॉर्म्स एंड रियलिटीज. माने नॉर्म्स बोले कौन दृष्टिकोण और रियलिटी कोण ताकू से शो करे. नेक्स्ट होची ओवरलैपिंग. तो ओवरलैपिंग कोण ना दिस फीचर्स शो दैट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्लब्स को एग्जिस्ट विथ ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर सेट्स. दिस डिनर्स ओवरलैपिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर ऑफ द बोथ सोसाइटी ऑफ सोसाइटी बिहेवियर ये काम करे ओवरलैपिंग. तो ये जदि आप नोट्स चाहती डिस्क्रिप्शन में मुझे टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देती आप जॉइन हाँ आप नोट्स मिल. थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो.